Good morning and welcome to all of you. This is the fifth lecture from our chapter number 1 from physics paper number 2, that is heat and thermodynamics. And in the last lecture, we have finished our first part, thermometry. In that thermometry lecture, we have seen what is heat and how we measure heat, and what is thermometry, that is nothing but measurement of temperature, and what is the instrument we use for measurement of temperature, that is a thermometer. How we construct a thermometer, what are the different types of thermometer depending upon their materials and principle of their working, construction, their calibration, sensitivities. These are the characteristics of thermometer. Then we have seen 4 different types of scale. One is a degree centigrade scale, and the other is Fahrenheit scale, degree Kelvin scale, and Rankine scale. And after that, we have derived one relation between all these scales, all these 4 scales, and we can also derive we can also derive a relation between any 2 of these scales. So what is the procedure? The procedure is simple, that we have to just define 2 points in every thermometer to about different scales of measurement or different degree centigrade scale. Means if you are studying a centigrade scale and a Fahrenheit scale, and we have to find the relation between these 2, we need to define 2 different points in both the scales. Means we have to define ice point of water and steam point of water. And say we consider degree centigrade scale and Kelvin scale. So for degree centigrade scale, 0 degree centigrade is the ice point, and corresponding degree Kelvin point is nothing but 273 kelvins, and steam point is 100 degree centigrade in centigrade scale, and 373 degree kelvins in Kelvin scale. So at after this, we are going to start our second part of this chapter, this thermal conductivity. So first we have to know why we use the word conductivity. What is the meaning of conductivity? Conduct means we have to take something from one point to other point. Conduct, we know conductor in bus. That is, so same thing applies here. Conduction means conduction, and we generally use it in electricity also, and we know the electrical conductivity. Electrical conductivity. So similar manner, there is a thermal conductivity. So first we should understand what is conductivity or what is electrical conductivity. Means it is nothing but if there is a wire and there are free charges and they are nothing but electrons, and if these free charges are moving, if these free charges are moving, but at any point these 3 charges, say consider 3 charges, they move in random direction, they move in a random direction, and the net current flow here is 0. Net current flow is 0, and if we apply electric field in a particular direction, we connect it, and the direction of electric field is this, then all 3 electrons will move in the same direction, and this is nothing but current flowing through. And what will happen here? These electrons will move in the same direction, and this is nothing but conductivity. This is nothing but conductivity. And if it is a good conductor, then there is a large amount of current flows. And the other aspect, that when these electrons move through the wire, there are atoms and there are other electrons also, so they will collide with other electrons or other atoms, and there will be collision, and there will be loss of net flow, and that we call it as a resistance.
that we call it as a resistor. So if there are more electrons means more conductivity, but there will be a resistance also. So conductivity का ही रिवर्स क्या होता है, रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी का ही उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी क्यों होती है कि यहाँ पर कोलिजन्स होते हैं और वो कोलिजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेजिस्ट करते हैं. दे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज व्हाई, एंड इफ देयर इज अ गुड कंडक्टर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. इफ देयर इज अ बैड कंडक्टर मींस यू कंसीडर insulator, then there are less number of electrons. Less number of electrons रहेंगे, less current flow होगा, and there will be less conductivity. So conductivity, electrical conductivity is nothing but a rate of charge of flow of electrons, rate of charge of flow of electrons per unit area, per unit time, per unit area, per unit time. And conductivity for any material at a particular temperature. Here it is important to consider a particular temperature is constant. But क्योंकि अगर temperature increase कर दिया तो there will be increase in number of electrons and there will be increase in collision also in some cases. अगर semiconductor है, temperature increase कर दिए तो वहाँ पर करंट इंक्रीज होता है. बट इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, अगर वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी लेस हो जाती है क्योंकि कोलिजन्स ज़्यादा हो जाता है. सो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट टू स्टडी. सो वी अंडरस्टैंड कंडक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, number of charges. We can say rate of flow of charges is nothing but current. Rate of flow of charge is nothing but current. Conductivity is number of charges crossing unit area in unit time at a particular constant temperature. क्योंकि जैसे ही temperature change होगा conductivity भी change. And what is the difference between resistance and resistivity? Very similar. Resistivity is constant for any material, irrespective of its shape and size. Because resistivity क्या होती है? It is resistance per unit area per unit length. Resistance per unit area per unit length. Rho is equal to RA by L for unit area per unit length. यानी resistivity constant है, but the resistance is different. अगर वायर का साइज थिकनेस मोटा कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है. और वायर की लेंथ अगर कम कर दी, लेंथ अगर कम कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती, कम हो जाती. सो रेजिस्टेंस is constant when the physical state of that material is constant, but resistivity is constant irrespective of its shape and size. Okay, so this is all about electrical conductivity. अब हमको देखना है थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहती है. थर्मल कंडक्टिविटी. सो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने क्यों देखा? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड थर्मल कंडक्टिविटी. So electrical conductivity we show it by this, and for thermal conductivity we show it by K. Now we all have observed that when there are two types of benches here, two types of desks here, and one desk is made up of wood and the other desk is made up of metal. Then what will happen? If the temperature is 40 degrees centigrade, say here it is in summer, it is natural to have 40 degrees temperature, and if you touch the wood table and similarly if you touch the metal table, what will happen? You will observe more heat at, or more temperature, you cannot say temperature, more heat at metal desk and less heat, you will have observed less heat at wood desk. क्यों? Why?
surrounding temperature all over in the room is 40 degrees centigrade. Still, if you have good desk and if you have a metal desk, you will observe less heat here, more heat here. सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये इसको अगर हाथ लगाएंगे तो ये कम गर्म लगेगा, और इसको हाथ लगाएंगे तो हमको 40 डिग्री में तो अच्छा खासा झटका लग जाएगा। क्यों होता है ये? टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. Why it is showing more heat here, less heat here? Because of this quantity thermal conductivity. Because of this quantity thermal conductivity. Now what will happen? अगर तुम इसको टच करते हो तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेस है, इसीलिए यहाँ से जो हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो हीट फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारे हाथ पर, वो कम है. टेम्परेचर सेम है लेकिन हीट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है कंपेयर टू दिस, यानी इसकी वजह से हीट फ्लो कहाँ होना चाहिए? हीट फ्लो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट few lectures, that heat flow is always from high temperature to low temperature. हमारे बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली कितना होता है? 33 डिग्रीज, और यहाँ पे कितना है? 40. तो ऑब्वियसली हमको गर्म लगना चाहिए, लेकिन ये उतना गर्म नहीं लग रहा क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है. ये हीट कंडक्ट उतनी स्पीड में नहीं करता है जितनी स्पीड में ये करता है, जितनी स्पीड में ये करता है. इसीलिए मेटल से हमको झटका अच्छा खासा लग जाता है. इसीलिए तो हम तवा वगैरह स्टील का, मेटल्स की यूज़ करते हैं. क्यों? अगर लकड़ी की यूज़ करेंगे तो खाना पकेगा नहीं, बिकॉज इट इज लेस कंडक्टिव कंपेयर टू मेटल्स. तो इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. यानी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कंडक्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी को. वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी क्या कंडक्ट करती है? हीट को. इसीलिए वुड ठंडा महसूस होता और मेटल जो है वो अच्छा खासा हमको गर्म महसूस होता है. एंड हाउ वी शो थर्मल कंडक्टिविटी विथ K. एंड in these future lectures we have to see what is the coefficient of thermal conductivity and how it change with the material. सॉलिड के लिए अलग होता है, गैसेस के लिए अलग होता है, वगैरह वगैरह हमको सब देखना है इस चैप्टर में. सो वुड की थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम बोलेंगे तो इट इज लेस. मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे इट इज वेरी मच हायर कंपेयर टू. दैट इज व्हाई वी ऑब्जर्व मोर हीट here, more heat here. Okay, so you got it, you got the point about thermal conductivity. It is conduction of heat. Okay. Now we all know heat, it is nothing but average energy per unit molecule. Of material. And how we define thermal conductivity? It is nothing but heat flowing through a material per unit area of cross section in unit time, and one more thing is that due to a unit temperature gradient. So heat flowing through a material
current area, the amount of heat flowing is we show it by delta Q through area of cross section, or you can say thickness x, and through temperature gradient delta T, or you can see say delta theta also, where टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज करते हैं. सो व्हाट इज you understand area of cross section and the heat, amount of heat flowing, but what is temperature gradient? टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? ये हमको पता है हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सो इफ इट इज 40 degree and here it is 30 degree, then what will happen? The temperature will flow from 40 to 30. अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री से. इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा क्यू. इट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी चेंज इन टेम्परेचर. ग्रेडियंट यूज ही क्यों करते हैं? ग्रेडियंट इज अ मैथमेटिकल टर्म. वी यूज इट टू शो द चेंज. सो टेम्परेचर ग्रेडियंट, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. इसीलिए तो फ्लो हो रहा है. अगर प्रेशर की वजह से लिक्विड फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रही है फ्लूइड डायनामिक्स में, सो वी से प्रेशर ग्रेडियंट या लेंथ ग्रेडियंट भी बोलते हैं. अगर किसी लेंथ की वजह से, एरिया की वजह से कोई चीज़ फ्लो हो रही है या मूव कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस ग्रेडियंट. ग्रेडियंट भी बोलते हैं, सिंपल डिस्टेंस ग्रेडियंट नहीं, तो ग्रेडियंट भी बोलते हैं. एंड सिमिलर इन केस ऑफ हीट, सिमिलर इन केस ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज है तो ही हीट फ्लो होगी, नहीं तो हीट फ्लो होगी क्या? नहीं. दोनों मटेरियल के हीट अगर सेम है, मतलब अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन, एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल सेम, तो दोनों की एनर्जी अगर सेम है तो दोनों का कोलिजन होगा भी. तो कैसे? दोनों की एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी, क्योंकि कोई हाई एनर्जी पे है ही नहीं और कोई लो एनर्जी पे है ही नहीं. Okay, so in this today's lecture we'll stop here, and what we have studied in this lecture, it is nothing but thermal conductivity, and we have seen the definition of thermal conductivity. In the next few lectures we have to define and derive the equation for coefficient of thermal conductivity and how heat transfer from one position to other position. That is, there are three modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Okay, thank you very much.